Now, candidates, is the screen visible? Screen is blur. Wait 1 second. Is the screen still blur? Okay, now it is clear. I'm getting the answers. Now it is clear. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. Now clear, ma'am. Okay, chalo. What is the answer to the first question? What is the answer to the first question? A company decides to recruit only candidates who fit its long-term leadership pipeline instead of merely filling the current vacancies. This approach reflects which concept? Replacement hiring, strategic human resource management, reactive human resource planning, workforce downsizing. Okay, so most of the candidates answered option B. Let's see the correct answer. Yes, correct answer is strategic human resource planning. Okay, so when we are doing the human resource planning or recruitment activities as per the long term career goal, long term organizational objective, as per the organizational goal, then no doubt the correct answer will be option B. Okay, got it? अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट लाइक रिप्लेसमेंट हायरिंग का मतलब होता है कि किसी कैंडिडेट ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी कैंडिडेट को फायर किया है तो उस इमीडिएट वेकेंट पोजीशन को हमें फिल करना है, उस कैंडिडेट को हमें रिप्लेस करना है, दैट विल कम अंडर द रिप्लेसमेंट हायरिंग. गॉट इट? रिएक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है, यहाँ पे आपको दो टर्म्स समझने होंगे, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव. ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब कि आप कोई एक्शन आप पहले से ले रहे हो एंड रिएक्टिव का मतलब है कि आप कोई एक्शन बाद में ले रहे हो. तो रिएक्टिव ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से कोई शॉर्टेज ऑब्जर्व हुई है और उसके बाद अब आप रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है, सो दैट विल कम अंडर रिएक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. वर्कफोर्स डाउनसाइजिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले ऑफ कर रहे हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से छटनी कर रहे हो. ठीक है, सो दैट वी कॉल्ड वर्कफोर्स डाउनसाइजिंग. ओके, गॉट इट? सो whenever the question is talking about the long term leadership pipeline, so that will come under strategic human resource management. Got it? Let's move on to the next question. Okay, so next question is, which of the following explains the difference between human capital and human resource? Both terms have exactly the same meaning. Human capital refers only to educational qualification. Human resource refers to employees, whereas human capital emphasizes the value created through employees' knowledge, skills, and competencies. And human capital refers only to senior management employees. So, what will be the correct answer, candidate? Okay, yes, yes. So, many candidate answered option C. Let's see the correct answer. Yes, correct answer is option C. Human resource refers to the employees, whereas human capital emphasizes the values. See, I tell you, whenever the term human resource, so human resource का मतलब होता है normal employees. Okay, like you will join the bank, you will be referred to as the human resource. Okay, got it? But human capital को मत का मतलब होता है कि जब हम लोग उस ह्यूमन रिसोर्स को, उस एम्प्लॉयज को एक वैल्यूज की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है वो तुरंत ले ऑफ कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अगर ले ऑफ कर रही है तो इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटिंग इट्स एम्प्लॉयज जस्ट एज अ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस चेंज हो जाता है. ठीक है, एंड ह्यूमन कैपिटल में वी सी दी एम्प्लॉयज एज द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, गॉट इट? Okay, got. So therefore the correct answer is option C. Let's move on to the next question.
Question number 128. Okay, so assertion A is competency mapping is widely used in succession planning. Okay, and the reason is given. Competency mapping identifies the knowledge, skills, abilities, behavioral competencies required for the future roles. So both A and R are true and R is the correct explanation, or both A and R are true but R is not the correct explanation. A is true and R is false. A is false and R is true. So which is the correct option? Okay, so which is the correct option? Competency mapping is widely used in succession planning. Okay, and reason is given that succession planning identifies the knowledge, skills, abilities, behavioral competencies required for the future role. So let's see the correct answer. Yes, correct answer is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation. Okay, so see, you must have read this topic of competency mapping. ठीक है, सो नॉर्मल टर्म्स में कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब होता है कि हमें किसी भी रोल में किसी भी पोजीशन के लिए हमें उस एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज यूज्ड इन बोथ द केसेस, फॉर प्रेजेंट नीड ऑल्सो एंड फॉर फ्यूचर नीड ऑल्सो. ठीक है, सो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग is used for present need, so that is also correct. Got it? So competency mapping is used for both the purpose, for present need as well as for future needs, and future needs का मतलब है succession planning. So therefore the correct option is option A. Okay, so let's move on with the next question. Question number 129. According to Herzberg two-factor theory, which of the following action is most likely to increase employee motivation rather than merely reducing the dissatisfaction? Okay, so which of the following action is most likely to increase the motivation? Okay, merely reducing the dissatisfaction, improving office lighting, increasing job autonomy, providing better canteen facilities, revising leave rules. What is the correct option? Yes. Let's see the correct answer. Yes. Option B is the correct answer. Increasing job autonomy. See, in Herzberg theory, there are two factors. Okay, like intrinsic and extrinsic. That we call like hygiene factors and motivational factors. So, बाकी जो options थे आपके, like improving office lighting, providing better canteen facilities, revising the leave rules, ये सब ऑप्शंस आपके आएंगे. आप कहाँ कौन से फैक्टर्स में आएंगे? हाइजीन फैक्टर्स में. ठीक है, लाइक एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स. ठीक है, एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स में आपके आएंगे जो जब हाइजीन फैक्टर्स आपके फुलफिल हो जाते हैं उसके बाद आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि इंक्रीजिंग जॉब ऑटोनॉमी. Okay, got it. So therefore option B is the correct answer. Increasing job autonomy, this is the motivational intrinsic factors. Do you get the answer? Chalo, let's see the correct let's see the next question. Question number 130. A manager consistently rates all employees as average despite noticeable differences in performance. This appraisal error is known as halo effect, licency error, central tendency error, contrast error. ओके, लाइक जहाँ पे जो मैनेजर है वो हर एम्प्लॉय को सेम रेटिंग दे रहा है एज एवरेज. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल टेंडेंसी एरर. ठीक है, सो इट मीन्स कि जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज को एक जैसी रेटिंग दे देते हैं, ठीक है, तो दैट वी कॉल सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आपके हैलो इफेक्ट, ये आपको पता है कि जहाँ पे हम एक पॉजिटिव ट्रेट, सिंगल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अगर हम रेटिंग दे रहे हैं, दैट विल कम अंडर हैलो इफेक्ट.
एंड अगर हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अगर हम रेटिंग दे रहे हैं, दैट विल कम अंडर हॉर्न इफेक्ट एंड लीसेंसी एरर, कि जहाँ पे हम उनको अनफेयरली हाई रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। लाइक हर एक एम्प्लॉइज को हमने अनफेयरली हाई रेटिंग दी हुई है, तो दैट विल कम अंडर लीसेंसी एरर। एंड कंट्रास्ट एरर, जहाँ पे हम एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय को हम दूसरे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर द कंट्रास्ट एरर, ठीक है। सो यस, फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम सेम रेटिंग दे रहे हैं, सेम एवरेज रेटिंग टू ऑल द एम्प्लॉयज, दैट विल कम अंडर सेंट्रल टेंडेंसी एरर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following situation is the best example of functional conflict? Employees refusing to cooperate due to personal dislike, team members debating multiple alternatives, team members debating multiple alternatives before selecting the best solution. Okay, workers damaging the company property during protest, and two departments refusing to share information. Okay, I know you will get confused between two options. Okay, so choose carefully. What is the correct answer? Functional conflict. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो फंक्शंस एम्प्लॉयज को परफॉर्म करना है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। गेट द पॉइंट? फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो फंक्शंस एम्प्लॉयज को परफॉर्म करने हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। So now choose the correct answer. Okay, let's see the correct answer. So option B is the correct answer. Team members debating multiple alternatives before selecting the best solution. ठीक है, so this is related to functional. ठीक है, जो many candidates are telling option D. Okay, many candidates are telling option D, like two departments. That will come under departmental conflicts. Okay, like suppose HR department and marketing department is not cooperating, so that will come under departmental conflicts. Okay, so for functional conflicts it means कि टीम मेंबर्स को जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टीम मेंबर्स डिबेटिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स बिफोर सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132। Which of the training evaluation question corresponds to level 4 of Kirkpatrick model? This is a bit tricky one. This is a difficult question. If you know all the levels of Kirkpatrick model, then you will be able to answer this question. Okay, so what is the level 4? Did employees enjoy the training? Did employees learn new knowledge and skills? Did employees apply the learning on the job? Did the training improve the organizational productivity and profitability? So what is the correct answer? What is the level 4 of Kirkpatrick model? Acha candidates, can you tell me the remaining levels of Kirkpatrick model in the comment section? Before moving on to the solution, I want to know from your side what are the other levels? Level 1, level 2 and level 3 of Kirkpatrick models. Write in the comment section what are other levels of Kirkpatrick model. So did employees enjoy the training? Did employees learn new knowledge and skills? Did employees apply the learning on the job? Or did the training improve organizational productivity and profitability? Okay, chalo. Reaction, learning, behavior, result. Behavior, action and behavior. Akshay's answer is more correct as compared to the other candidates. Okay, let's see the correct answer. So yes, correct answer is option D. Did the training improve organizational productivity and profitability? See, this model is important. You have to learn all the 4 layers, all the 4 levels. Okay, like reaction, learning, behavior and result. Okay, so
whenever the क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस कि सपोज ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद इमीडिएट रिएक्शन जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए, डिड एम्प्लॉइज एंजॉय द ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये यहाँ से हमको रिएक्शन पता चल रहा है कि सपोज ट्रेनिंग खत्म हुई एंड तुरंत हम फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग इंजॉय करी कि नहीं करी, सो दैट विल कम अंडर रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका ऑप्शन बी है, डिड एम्प्लॉइज लर्न न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, दैट विल कम अंडर लेवल 2 लर्निंग। गॉट इट। ठीक है, कि जो ट्रेनिंग दी गई है एम्प्लॉइज को उससे एम्प्लॉइज ने क्या लर्न किया, उससे एम्प्लॉइज ने क्या सीखा। ठीक है, सो what new skills employed acquired, that will come under level 2 learning. Okay, option C is yes, level 3 behavior. ठीक है, did employees apply the learning on the job। ठीक है, कि जो employees ने जो ट्रेनिंग ली क्या वो अपनी ट्रेनिंग को अपने जॉब में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट विल कम अंडर बिहेवियर। एंड यस, लेवल 4 इज रिजल्ट, कि उस ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, गॉट इट। सो दीज आर दी फोर लेवल्स ऑफ किरपैट्रिक मॉडल। You should learn these all the levels: reaction, learning, behavior and result. So for this question, yes, correct answer is option D. Okay, let's move on to the next question. Question number 133. Under the Code on Wages 2019, which of the following is one of the major objective of introducing a floor wage? To replace the minimum wage completely, to ensure that the state government do not fix wages below a nationally determined minimum benchmark, to eliminate all wage negotiations, to replace the collective bargaining. So what is the objective of floor wage? What is the objective of floor wage? To replace the minimum wage completely, to ensure that the state government do not fix wages below a nationally determined minimum benchmark, to eliminate all wage negotiations, to replace the collective bargaining. Okay, chalo, let's see the correct answer. So yes, correct answer is option B, to ensure state government do not fix wages below a national minimum benchmark. See, candidates, in code on wages there are two terms given, minimum wage and floor wage। ठीक है, सही। वेजेस कोड के आने से पहले सिर्फ मिनिमम वेज का कंसेप्ट था। ठीक है, कि लाइक हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग एक मिनिमम वेज डिसाइड कर दी थी हर सेक्टर के लिए, एंड उस मिनिमम वेज से नीचे वेजेस फिक्स नहीं होगी। ठीक है, नाउ अभी जब लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, फ्लोर वेज। सो फ्लोर वेज का जो अमाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने असाइन किया है, ये पैन इंडिया सेम रहेगा। ठीक है, मिनिमम वेजेस में क्या डिफरेंस था कि मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी अपने स्टेट के लिए। ठीक है, सपोज अगर कोई बैंगलोर में जॉब कर रहा है तो वहाँ पे मिनिमम वेज का अमाउंट कुछ और होगा, एंड सपोज अगर वही एम्प्लॉय अगर गुड़गांव में या नोएडा में जॉब करने लगे तो वहाँ पे मिनिमम वेज का अमाउंट अलग हो जाएगा। ठीक है, सो इससे कॉन्फ्लिक्ट होता था। ठीक है, कि बैंगलोर में कर्नाटक स्टेट में मिनिमम वेज कुछ और था, एंड देन गुड़गांव में हरियाणा स्टेट में मिनिमम वेज कुछ और था। तो इसीलिए लेबर कोड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, फ्लोर वेज। इसका कंसेप्ट क्या है कि मिनिमम वेज आपकी फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती। ठीक है, लाइक फ्लोर वेज सबसे मिनिमम होगी, उसके नीचे आपकी कोई भी वेज असाइन नहीं होगी। ठीक है, सो सबसे नीचे आपकी फ्लोर वेज आएगी, फिर उसके ऊपर आपकी मिनिमम वेज आएगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती है एंड वो मिनिमम वेज आपकी फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती। गॉट इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ दिस टॉपिक, मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज। इसमें कंफ्यूज मत होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टू टर्म्स, floor wage and minimum wage। ठीक है, so here for this question correct answer is option B, to ensure state government do not fix wages below a national minimum benchmark। got it। चलो let's move on to the next question। Question number 134।
Which of the following disputes is appropriately resolved using the collective bargaining rather than individual grievance handling? Delay in issuing an experience certificate, annual wage revision affecting all the employees, incorrect leave balance of one employee, delay in reimbursement of one employee travel claim. So, which of the following dispute is resolved through collective bargaining rather than individual grievance handling? Delay in issuing an experience certificate, annual wage revision affecting all employees, incorrect leave balance of one employee, delay in reimbursement of one employee's travel claim. Okay, so many of the candidates answered option B. Let's see the correct answer. Yes, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनुअल वेज रिवीजन अफेक्टिंग ऑल एम्प्लॉयज. ठीक है, सी ऑप्शन बी में ऑल एम्प्लॉयज की बात हो रही है. बाकी जितने ऑप्शन है ऑप्शन ए, सी एंड डी, वहां पे एक सिंगल एम्प्लॉय की बात हो रही है. ठीक है, सो अगर कोई डिस्प्यूट या ग्रीवियंस अगर सिंगल एम्प्लॉय से रिलेटेड है, सो वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग का कोई काम नहीं है. वहां पे आपकी इंडिविजुअल ग्रीवियंस हैंडलिंग का परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है, अगर एक सिंगल एम्प्लॉय की अगर कोई भी क्वेरी है, डिस्प्यूट है या ग्रीवियंस है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल ग्रीवियंस हैंडलिंग परफॉर्म करी जाएगी. एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज यूज्ड वेयर इट इज अफेक्टिंग ऑल द एम्प्लॉयज. ओके, गॉट इट. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 135. A manufacturing company introduces wearable devices that continuously monitor workers' health, productivity, movement. Which HR concern is most likely to arise? Job evaluation, employee privacy and ethical HR analytics, job enlargement, workforce planning. Okay, a manufacturing company introduces a wearable devices, ठीक है, to continuously monitor workers' health, productivity, movement. Okay, so correct answer will be job evaluation, job privacy, ethical HR analytics, job enlargement or workforce planning. Correct answer will be, let's see the correct answer. Yes, correct answer is option B, employee privacy. ठीक है, क्योंकि see, manufacturing company is tracking every minute detail, health, productivity, movement. This we call the micromanagement. Like कुछ organizations माइक्रो मैनेजमेंट करती हैं अपने एम्प्लॉयज का. ठीक है, कि कितने बजे आए, कितने बजे गए, लंच कितनी देर किया, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कितना काम किया. लाइक मॉर्निंग में मीटिंग होगी, फिर एंड ऑफ द डे मीटिंग होगी, घर जाने से पहले मीटिंग होगी. ठीक है, सो दिस ऑल कम्स अंडर द माइक्रो मैनेजमेंट. सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम्प्लॉय प्राइवेसी एंड एथिकल HR एनालिटिक्स. ठीक है, सी ये सब ट्रैक करके ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू ओपन दी प्राइवेसी ना, लाइक एम्प्लॉय प्राइवेसी विल नॉट बी मेंटेन्ड देन देयरफॉर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 136. Which labor market condition is likely to increase employee bargaining power during salary negotiation? ठीक है, सो कौन सी कंडीशन में एम्प्लॉय की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो रही है? लाइक वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का पॉजिटिव साइड है, लाइक एम्प्लॉय के पास एडवांटेज है कि एम्प्लॉय बार्गेन कर रहा है. ठीक है, तो विच कंडीशन, अंडर विच कंडीशन एम्प्लॉय विल बार्गेन मोर? ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस लेबर सप्लाई, labor surplus, shortage of skilled professionals, economic recession with declining vacancies. Candidates don't get confused between two options. C, employee is bargaining. ठीक है, employee has the advantage to bargain. Under which condition is likely to increase the employee bargaining power? ठीक है, so yes, let's see the correct answer. Yes, correct answer is option C, shortage of skilled professionals. ठीक है, suppose when there is shortage of employees, ठीक है, like किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज हो रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 100 एम्प्लॉयज आएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज आएंगे, बट सपोज ओनली 20 एम्प्लॉयज के. ठीक है, सो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है.
ठीक है, बट उतने एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है. सो अंडर दिस कंडीशन एम्प्लॉयज गेट द एडवांटेज टू बार्गेन फॉर द सैलरी. ओके, सो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, shortage of skilled professionals. Okay, let's move on to the next question. Question number 137. A bank introduces AI based resume screening, chatbot interviews, predictive analytics for hiring, and automated onboarding. Which HR function is undergoing the highest degree of digital transformation? Industrial relation, talent acquisition, compensation management, payroll administration. ठीक है, सो जितने भी यहाँ पे एक्शंस आपको बताए हैं, लाइक रिज्यूमे स्क्रीनिंग, चैटबॉट इंटरव्यूज, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर हायरिंग, ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग, ये सब किससे रिलेटेड है? और इसमें एआई आ गया है. ठीक है, सो ये सब किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल रिलेशन से, टैलेंट एक्विजिशन से, कि कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट से, कि पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन से? लेट्स सी द करेक्ट आंसर. Yes, correct answer is option B, talent acquisition. All these things are related to talent acquisition. ठीक है, सो लाइक स्टार्टिंग से लेकर कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टीजमेंट निकालती है, ठीक है, जॉब का, जॉब पोस्टिंग निकालती है मार्केट में, वहां से लेकर ऑन बोर्डिंग तक, ठीक है, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ऑन बोर्डिंग होगी, वहां तक इस पूरे प्रोसेस को हम टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं. टैलेंट एक्विजिशन के अंदर आपका recruitment, selection, interviews, screening, onboarding, these all comes under the talent acquisition. Okay, so correct answer is option B, talent acquisition. Next question 138. A company has a highly skilled workforce but employees frequently leave. Why? Because they see limited career growth opportunities. Which HR intervention is most appropriate? Increase overtime allowance, introduce a structured career development and internal mobility program, reduce the recruitment standards, increase the working hours. A company has a highly skilled workforce, but employees are frequently leaving. Can you give me one realistic example of this situation? This is happening in one of the company right now. Can anyone give me? If you are aware with the current news, you can answer, you can tell that company. It is a government company. Right now that government company news is coming very frequently. This situation has been in that government company. Can anyone tell the name of that government company? Okay, I'm telling, wait. So let's see the correct answer. Yes, option B is the correct answer. Yes, Prashant, correct. Option B is the correct answer. Introduce the structured career development and internal mobility program. Okay, so right now ISRO is highly in news. Currently, 100 scientists have resigned from the ISRO, and those scientists are not the entry level. Okay, those scientists are skilled workforce. They are from the senior. They are senior profile. ठीक है, सो इसरो में अभी भी जितने 100 साइंटिस्ट ने रिजाइन किया, दे आर फ्रॉम दी सीनियर प्रोफाइल. ओके, सो यस, टू counteract this situation, yes, option B is correct. Introduce the structured career development and internal mobility program. Let's move on to the next question. Question number 139. So see, candidates, whenever you are studying any HR topic, be it HRM, OB, labor laws, labor codes, always related to the practical examples. HR is not theoretical. See, if you are viewing this as a boring subject, so what you can do, always find the practical example of the HR concepts, labor laws. Okay, so you will find it is interesting, because whatever you are studying in HR, labor laws, that is happening in the practical corporate. Okay, that is happening inside the corporate organization. Got it? Chalo. So next question is, which of the following best reflect the concept of person organization fit? Matching an employee's technical skill with job requirement. Okay, matching an employee's values, beliefs, and behavior with the organizational culture.
matching salary with the market standards, matching educational qualification with the job specification. Okay, so you have to think about the person organization fit. So let's see the correct answer. Correct answer is option B, matching an employee's belief, values, and behavior with the organizational culture. Okay, so this is the concept of organizational culture. Okay, you must have read the definition of organizational culture, where the employees culture, employees values should match with the organizational values, organizational culture. So that comes under the person organization fit. Other options, like, they are not the person organization fit. Okay, so like other options are comparing with the job evaluation, salary, job requirement. ठीक है, so that will not come under person organization fit. ठीक है, so person organization fit का मतलब है कि person के जो belief हैं, organization के जो belief हैं, दोनों match होने चाहिए. So yes, the correct answer is option B. Let's move on to the next question. Question number 140. Which HR practice is most effective in reducing unconscious bias during recruitment? Increasing interview duration, structured interviews with standardized evaluation criteria, hiring only through employee referral, allowing managers complete discretion in selection. ठीक है, so which HR practice is most effective in reducing unconscious bias? ठीक है, like रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह का बायस नहीं होना चाहिए. ठीक है, so increasing interview duration, structured interviews with standardized evaluation criteria, hiring only through employee referral, allowing managers complete discretion in selection. Let's see the correct answer. So yes, correct answer is option B, structured interviews with standardized evaluation criteria. इसका मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो सेम होना चाहिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस. ओके, सो ऑप्शन बी का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, सो वहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हर कैंडिडेट्स के लिए सेम होना चाहिए, वेदर दैट कैंडिडेट्स इज फ्रेशर और वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है, सपोज I will take the example of this IBPS. Okay, so you will go for the interview and IBPS के interviews में freshers भी होंगे and work experience भी होंगे. ठीक है, so what you can do, like कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास डाउट आया था कि मैडम मैं फ्रेशर हूँ, तो क्या मुझे कुछ इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिलेंगे क्या, या फिर मैडम मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्या मुझे इसका एडवांटेज मिलेगा इंटरव्यूज में. सो सी, सिंस क्राइटेरिया ऑफ IBPS क्या है, IBPS का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कि IBPS इज इनवाइटिंग ऑल द कैंडिडेट्स whether that candidate is a fresher or experienced, and the interview evaluation criteria is same. So don't think like that कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे. नो, ठीक है, सो यहाँ पे बायसनेस को अगर हमें रिमूव करना है, ठीक है, सो यस, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज विद स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. गॉट इट. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 141. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 141. Which of the following best illustrates the psychological safety in a team? Okay, so if you have same weightage for marketing and HR, please prepare this answer. This question will come in the interview. Why you are not opting for IBPS SO marketing? Why you are opting for IBPS SO HR? Okay, so this question can come. Prepare this answer. So which of the following best illustrates the psychological safety in a team? Employees avoid questioning managers. Employees freely express the ideas and admit the mistakes without fear of punishment. Employees receive higher salaries. Employees always agree with their supervisor. Okay, so yes, let's see the correct answer.
Correct answer is option B. Employees freely express ideas and admit the mistakes without fear of punishment. So this is known as the psychological safety. Psychological means related to your mind, related to your like intellectual. Okay. So whenever an employee is freely expressing his ideas, okay, so it means he has that psychological safety in his mind. ठीक है कि like मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा डर होता है, ठीक है, अपने ओपिनियन रखने में, ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, लाइक वेन एवर यू विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर विल आस्क यू टू गिव योर ओपिनियन, ठीक है, सो मोस्टली एम्प्लॉयज़ डरते हैं अपनी ओपिनियन रखने में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सीनियर्स. So whenever any employee is freely expressing the ideas, admitting the mistakes without the fear of punishment, so that will come under psychological safety. ठीक है, चलो let's move on to the next question. Question number 142. Under the Industrial Relation Code 2020, the primary objective of Grievance Redressal Committee is to register the trade union or resolve the individual employee grievances within the establishment or determine the minimum wages or conduct the disciplinary inquiries. So what is the purpose of grievance redressal committee? Register trade union, resolve individual employee grievances within the establishment, determine minimum wages, conduct disciplinary inquiries. Okay, before moving on to its solution, I want the answer from your side. What is the condition for grievance redressal committee? If any organization wants to establish the condition, wants to establish the committee, so what is the condition for grievance redressal committee? Can anyone answer in the comment section? How many minimum members are required to form the grievance redressal committee? Before moving on to the solution, I want all the candidates to answer this question. How many minimum members are required? For grievance redressal committee? Other students? Other students? Other candidates, please answer. You must have read this topic. You must have read this topic. 100, are you sure? Please rethink about this. Please rethink about this. 100, 250. I know you are getting confused between two committees. I know. Please rethink your answer. Okay, chalo, let's see the correct answer for this question. Okay, so option B is the correct answer. The purpose of grievance redressal committee is to resolve individual employee grievances within the establishment. Got it? So what is the purpose of grievance redressal committee? To resolve the individual employee grievances within the establishment. Now, students, 100 is for work committee. Shivam, there are two terms, work committee and grievance redressal committee. 100 employees are required for work committee. And for grievance redressal committee, 20 employees are required. Yes, 20. Minimum number of employees, 100 for work committee and 20 for grievance redressal committee. Got it? Don't get confused between these two committees. For work committee, 100. For grievance redressal committee, 20.
डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, which of the following is the best example of leading HR indicator? Annual attrition rate, employee engagement score, number of resignation during the previous year, total disciplinary cases closed. Which is the best example of leading HR indicator? You must have revised this topic, leading HR indicator and lagging HR indicator. ठीक है, I hope you know the difference between leading HR indicator and lagging HR indicator. Yes, correct answer is option B, employee engagement score. This is the leading HR indicators. Other options are for lagging HR indicators. ठीक है, so leading means लीड करना, लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है, एंड लैगिंग मीन्स जो पीछे रह गया, ठीक है, लाइक पास्ट, रिलेटेड टू द पास्ट. So yes, correct answer is option B, employee engagement score. Let's move on to the next question. Question number 144. A company wants to reward the employees for acquiring the additional job related skills even if they continue in the same position. Which compensation approach is most appropriate? Time rate wage system, seniority based way, skill based pay, कमीशन बेस्ड पे. सपोज किसी एम्प्लॉय ने एडिशनल स्किल्स एक्वायर करी है एंड उसके लिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन उसको पे करना चाहता है, ठीक है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, लेट्स सी द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्किल बेस्ड पे. ठीक है, skill based pay. If organization is making the payment for acquiring the new skills, then the correct answer is skill based pay. Let's move on to the next question. Question number 145. Which leadership approach is most suitable when leading a team of highly experienced professionals who require minimal supervision? ठीक है, लाइक हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की टीम है एंड उनको बिल्कुल भी सुपरविजन की जरूरत नहीं है. सो विच लीडरशिप विल कम? ऑटोक्रेटिक, डेलीगेटिव, डायरेक्टिव, माइक्रो मैनेजमेंट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं है. ऑटोक्रेटिक, डेलीगेटिव, डायरेक्टिव और माइक्रो मैनेजमेंट? What is the correct answer? Yes, Shubham. So let's see the correct answer. Yes, correct answer is delegative. See, हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है. सो वहाँ पे उनको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है. सो इट मीन्स जो उनका जो मैनेजर है वो उनको बस वो डेलीगेट करेगा, ठीक है, कि आपको ये काम करना है. क्यों? क्योंकि वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं. ओके, वहाँ पे डेलीगेट किया जाएगा. ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे लीडर उनको बता रहा है कि क्या काम करना है, ठीक है, पर लीडर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि लीडर उनको बता रहा है कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, बस वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं होगा. डेलीगेटिव में क्या है कि लीडर उनको ये भी नहीं बताएगा कि कैसे करना है. लीडर विल नॉट टेल देम हाउ टू डू दैट वर्क. वो बस उनको डेलीगेट कर देगा कि ये काम करो. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेलीगेटिव. ऑटोक्रेटिव इन का मतलब है कि वेयर द लीडर इज टेलिंग हाउ टू डू द वर्क बट दैट लीडर इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व, ठीक है. ऑटोक्रेटिक. डेलीगेटिव का मतलब है कि दे आर ऑलरेडी हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, उनके पास एक्सपीरियंस हैं, उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं है. लीडर विल नॉट टेल देम हाउ टू डू दी वर्क, ठीक है. सो लीडर मैनेजर बस उनको डेलीगेट कर देगा कि ये काम आपको करना है, दैट्स इट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप the students who have answered option A, you get your answer, you get your reason why option B is correct, ठीक है. So don't get confused between autocratic and delegative. Let's move on to the next question.
Question number 146. Which of the following differentiates job evaluation from performance appraisal? Job evaluation assess the employees, performance appraisal assess the job. Job evaluation determines the relative worth of job. Performance appraisal evaluates the individual employee performance. Both are identical HR process. Job evaluation is conducted annually while performance appraisal is conducted monthly. I know this is a easy question. Let's see the correct answer. Yes, option B. Job evaluation determines the relative worth, monetary. What will be the salary of that job, relative worth in terms of money, and performance appraisal evaluates the individual performance. Okay, so yes, correct answer is option B. Job evaluation determines relative worth and performance appraisal evaluates individual performance. Let's see the next question. Question number 147. A trade union and management negotiate the wages, working condition, leave policies through formal discussion. This process is known as arbitration, collective bargaining, adjudication, conciliation. There are only two parties, trade union. Trade union is representing the employees and management is representing the employer. So there are only two parties. Okay, trade union and management, and they are negotiating in terms of wages, working condition, leave policy through formal discussion. So what is the correct answer? Arbitration, collective bargaining, adjudication, conciliation. So yes, let's see the correct answer. Option B is the correct answer, collective bargaining. Okay, so when there are only two parties, then we refer to collective bargaining. Other options, arbitrator, adjudicator, conciliation. These are the third party. Got it? So always remember, when there are only two parties, then collective bargaining, and when there are more than three or more than three parties, then arbitrator, adjudicator, and conciliation. Okay, so correct option is option B, collective bargaining. Let's move on to the next question. Question number 148. Which labor market trend is most likely to increase the importance of re-skilling and upskilling initiative? Declining use of technology, rapid automation and artificial intelligence adoption, stable economic condition and reduced competition. ठीक है, so like री-स्किलिंग एंड अप-स्किलिंग की जरूरत कब पड़ती है? Declining use of technology, rapid automation and artificial intelligence adoption, stable economic condition, reduced competition. What is the correct answer? Okay. So many candidates answered option B. Before moving on with the solution, what is the difference between re-skilling and upskilling? Can anyone tell me? What is the difference between re-skilling and upskilling? Please write in the comment section. What is the difference between re-skilling and upskilling? Any random guess. I'm not, if you don't know the answer, no worries. Any random guess. So Shubham answered upskilling means adding new skills. Okay, other candidates? What is the difference between re-skilling and upskilling? Re-skilling, collective measure, upskilling, learning something new. And re-skilling means brushing up the previous skills that we already, okay. Let's see the correct answer first, then we will discuss the difference. So yes, correct answer is option B, rapid automation and artificial intelligence adoption. Whenever there is like technology is changing, okay, AI is coming, so there will be the need for reskilling and upskilling. Okay, so yes, correct answer is option B. Now, what is the difference? So see, candidates, upskilling means you are updating your skills that you already have. Got it? Upskilling means you are updating your skills. You all answered opposite answers. You all gave opposite answers.
ठीक है. Reskilling means new skills. Reskilling means obtaining new skills. ठीक है. Got it? Don't get confused. I know this is a bit confusing. So see, कैसे याद करना है. Up skilling में आपका up आ रहा है. So up skilling means update. You can relate like this. Up skilling means update. Got it? So up skilling means you are updating your existing skills. Like this you can remember. And re-skilling means you are acquiring new skills. ठीक है. Got it? So always try to relate the things. Upskilling is equal to update. What you will update? You will update your existing skills now. So upskilling is equal to updating your additional skills, updating your existing skills. And re-skilling means acquiring the new skills. Got it? Okay, so I hope you get the difference between reskilling and upskilling. Let's move on to the next question. Question number 149. Which HR analytics technique answer the question what is likely to happen in the future? Which HR analytic techniques answer the question what is likely to happen in the future? Future में क्या होने वाला है? Descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, prescriptive analytics. Option C, option C, option C, option C. Let's see the correct answer. Yes, correct answer is option C, predictive. Okay, because we are here predicting what will happen in the future, so that will known as a predictive. So you should remember these four terms. Descriptive analytics means हम describe कर रहे हैं कि what has happened. Diagnostic analytics कि हम लोग diagnose कर रहे हैं कि why it has happened, ऐसा क्यों हुआ. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है. ठीक है. एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की व्हाट एक्शन वी कैन टेक. सपोज हम लोग ने प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में सपोज एट्रिशन ज़्यादा होगा. ठीक है. हम लोग ने आज प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में एम्प्लॉय टर्नओवर एट्रिशन रेट ज़्यादा होगा. ठीक है. सो अब उस चीज़ को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, उस क्या एक्शन लें. सो दैट विल कम अंडर प्रिस्क्रिप्टिव. ठीक है. कि व्हाट एक्शन शुड वी टेक, दैट विल कम अंडर प्रिस्क्रिप्टिव. ठीक है. सो यू शुड be well known with all these four terms: descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive. ठीक है. Let's move on to the next question. Last question for this session, question number 150. This is a case study. A public sector bank experiences rising employee absenteeism, declining customer service rating, increased grievances, low engagement scores, high turnover among young officers. Which HR strategy is most appropriate at the first step? Increase recruitment to replace the employees who leave. Conduct a comprehensive organizational diagnosis using HR analytics, employee survey, exit interviews, grievance analysis before designing intervention. Option C, introduce strict disciplinary action for absenteeism. Option D, reduce employee training expenditure. Okay, so what action you will take? So let's see the correct answer. Yes, option B is the correct answer. We will conduct the comprehensive organizational diagnosis. We will conduct the survey. We will take the exit interviews. All these before designing the intervention. Yes, so correct answer is option B. Okay, so this was the last question for today's session. I hope you get the gist of what type of questions will be there. Acha, one more thing I want to ask from you all candidates. Should I make the level difficult of this MCQ? Should I make the level difficult? Should I introduce more difficult questions? Should I introduce more difficult question from tomorrow onwards? Because what I am finding, you are able to answer this question. Okay, sure.
So from tomorrow onwards, I will try to make more difficult questions. So because I'm happy to see that at least you are able to answer all these questions. Your basics are clear. So no doubt you just need more and more practice. Yes, of course, Shumam, from tomorrow onwards, I will try to add more questions about the labor laws and labor codes. Okay. And yeah, so as of now, 25 questions have been finished for today's session. Tomorrow, again, we will meet. Tomorrow is Thursday. Okay, so Thursday, tomorrow, 7 p.m., we will again meet. Same timing, 7 p.m. And yes, PDF, yes. Please join my Telegram channel. There you will get the PDF of all the sessions. Like this was the part 6, and all the sessions from part 1, 2, 3, 4, 5, and 6. All the PDF have been added in my Telegram channel. Link in bio in the about section of my Telegram of my YouTube channel. Okay, please join. Okay, so okay, chalo. We will meet tomorrow. Thank you. Good night. Prepare hard and all the best for your exam. ठीक है चलो